This is our fourth video. We are discussing a series of 66 questions, and these questions are very important. Okay, so in yesterday's video we have completed up to question number 40. So today we will start from 41. A solid is made up of two elements P, Q. Q atoms are present in packing. So two elements are there. First is, I'm changing the color. Okay, first element is P. Okay, second element is Q. Q are present in packing, so its number will be n. P occupy all tetrahedral void. So if number of atom in packing are n, then tetrahedral void will be equal to 2n, and all tetrahedral voids are occupied by atom P. Okay, what will be the formula? So P to Q will be the answer. P to Q. n को हमने हटा दिया, उसको रेशियो में ले लिया ना, सिंपल रेशियो में. ओके, P occupy all tetrahedral void ना, so answer will be P to Q. Now question number 42. 42 says that how many octahedral void are there in 1 mole of element having in packing? तो element, suppose A is present in packing, A in packing, so its number will be n, but here the value of n is 1 mole. N is 1 mole, and we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. It's mean atom A, number of atom A is 6.022 into 10 raised to power 23, which are present in the packing. Okay, question is that how many octahedral void will be there. So we know that octahedral voids are equal to the number of atoms which are in packing. So answer will be 6.022 into 10 raised to power 23. So students, what will be the value of octahedral void? If tetrahedral void is 6.022 into 10 raised to power 23, so what will be the value of tetrahedral void? So you will double it. Okay, you will double it. 2 into 6.022 into 10 raised to power 23. Next question is that 43 question. Two atoms are there, atom M and N. N form CCP packing, so its number is N. M occupy 1/3 of tetrahedral void. 1/3 of tetrahedral void कितने होते हैं? 2n. What is the formula? So 3 is here डिनोमिनेटर, तो 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3 से इसको भी करना पड़ेगा ताकि रेशियो सेम रहे. ये कैंसिल हो गया. M2N3 इज द आंसर. M2N3. ये क्वेश्चन आपका 2016 या 15 में था CBSE में. नेक्स्ट, रेडियस रेशियो रूल. So before discussing it, I am giving the quick revision. Radius ratio rule mean it represent the coordination number. Okay, if the radius of cation to the radius of anion is less than 0.225, then coordination number will be 3. If value is 0.225 to 0.414, coordination number will be 4. If 0.414 to 0.732, coordination number will be 6. Okay, if its value is greater than 0.732, coordination number will be 8. Okay, example is NaCl, here example is B2O3. okay, here CuCl, here CsCl, cesium chloride. These are the example. Okay, so you will remember the radius of cation to the radius of anion. ये रेशियो आपने याद रखना है किस किस के बीच में, कैटायन की रेडियस टू द एनायन की रेडियस. ओके, और आपने उसका रेशियो निकालना है. अगर रेशियो है लेस देन 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3. ओके, एंड द रेंज is 0.225 to 0.414, then coordination number will be 4, 6 and 8, so on. Now come to the question number first. Question says that two atoms A positive, B negative have radius 88 and 200 picometer. Okay, so students, here two radius are given, radius of cation and radius of anion. Question is that
predict the coordination number. So what we will do, we will take the ratio of cation to the ratio of anion. So ratio of cation is 88. So 88, it will be divided by radius of anion, that is 200. So 44 upon 100, answer will be 0.440. So its range किस किस के बीच में आ रही है, 0.414 टू 0.732, इस बीच में ये आ रहा है. सो और इस बीच में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, आंसर विल बी 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट इज 45. इन ए कंपाउंड AX, radius of cation A is 95, X is 181. Predict the crystal structure of AX and coordination number of each ion. So we will take the radius of cation, that is A positive, to the radius of anion, that is V negative. And radius of cation is 95 and radius of anion is 181. So 95 divided by 181, answer will be 0.524. So students 5 to 4. अगेन इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0.414 टू 0.732 के बीच में. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा. NaCl में ईच एटम इज सराउंडेड बाय 6 बोरोन एटम एंड ईच बोरोन इज सराउंडेड बाय atom A. Okay, now question number 46. 46 is a solid AB has NaCl structure if the radius, NaCl mean coordination number is 6, I told you, and coordination number 6 is range will be 0.414 to 0.732. Okay, so if the radius of cation A positive ion is 170 picometer, calculate the maximum possible radius. So students, here we can take, it is the ratio of cation to the ratio of anion. Okay, so we are doing this question by two methods. Okay, R positive, R negative is equal to, I am taking first 414 value, and in another case I am taking R positive upon R negative is 0.732. Okay students, now question is that maximum value of anion mean you have to calculate R negative. So here R negative will be equal to R positive divided by 0.414. Okay, but here will be R negative, it will be answer will be R negative will be 0 R positive divided by 0.732. तो स्टूडेंट्स मुझे आंसर बताओ, एक क्वेश्चन आपके पास है ये जिसमें R नेगेटिव की वैल्यू आ रही है R पॉजिटिव को डिवाइड करके 0.732 से, और यहाँ R पॉजिटिव आ रहा है 0.414 से डिवाइड करके. मैं इसको एक बार अलग लिख लेता हूँ. R पॉजिटिव R नेगेटिव इज इक्वल टू R positive divided by 0.414 and R negative is R positive divided by 0.732. किससे आंसर ज्यादा आएगा, जिसमें डिनोमिनेटर कम है, तो हम इसी से क्वेश्चन करेंगे. सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R positive? It is 170 picometer A positive. Okay, so 170 it will be divided by 0.414. 170 divided by 0.414 और आपका आंसर आ जाएगा 400. आंसर विल बी 410 पिकोमीटर आंसर. ओके, सो इट इज द आंसर. 170 डिवाइडेड बाय व्हाट, विच क्वेश्चन वी आर डूइंग. ओके, हाँ ठीक है, क्लियर है. अच्छा, अगर इससे आंसर करते तो कितना आता है, 170 को आप डिवाइड करना जरा, 170 डिवाइडेड बाय 0.732, 170 डिवाइडेड बाय 0.732, तो आंसर आता है आपका 232 पिकोमीटर. सो 232 इज ग्रेटर और 410 ग्रेटर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 410. ओके, नाउ
we have completed the question on radius ratio rule. Next question, this question is based on, these questions are based on topic density. First question is that edge length, what is the formula of density? Density is equal to Zm upon A cube into Na. Here Z is the number of particle. If you are talking about simple cubic unit cell, value of Z will be 1. If you are talking face centered, value would be 4. And if you are talking body centered, value will be 2. Okay. मास ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ए डायरेक्ट दे रखा होगा, नहीं तो 2r रख देना अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो. फेस सेंटर्ड होगा देन यू विल पुट 2√2r. बॉडी सेंटर्ड होगा देन यू विल पुट 4/√3r. Na is the Avogadro number. Its value is 6.022 into 10⁻23. Okay. Now first question, edge length of a NaCl crystal. NaCl generally face centered unit cell. So face centered है तो Z is equal to, sorry not Z, density is equal to Zm upon A cube into Na. Okay. So फेस सेंटर्ड, NaCl मीन फेस सेंटर्ड, ये ध्यान रखा करो आप, फेस सेंटर्ड होता है ये. तो कितना हो जाएगा 4. NaCl मास इज 58.5 डिवाइड बाय, आपको लैटिस दी हुई है 5.8, एज लेंथ दे दी 5.8 इंटू 10⁻, ये आपने खुद बताना है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं. एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो पावर कितनी हो गई, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद अपने आप बताना है कि नैनोमीटर होता है देन कितनी पावर होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम होता है तो कितना पावर होना चाहिए, पिकोमीटर होता है तो कितनी पावर होनी चाहिए. ठीक है, ये बेसिक सी बात है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. इनटू वी विल टेक द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. 6.022 इंटू 10⁻23. सॉरी स्टूडेंट्स, एक कॉल आ जाती है तो इसलिए हमें देखना होता है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो you will calculate the answer of density, okay, and will write in the comment box what is the answer of question number 47. Now question number 48. Lead sulfate crystal has NaCl structure. So students, watch carefully. Here lead sulfate resembled with NaCl and we took NaCl as the face centered. It's mean lead sulfate, it will also be NaCl type structure, that is face centered structure. But here you will make one correction, this is not sulfate, this is sulfide. This is sulfide. So what is its density? Density is question mark. Okay, so formula is density is equal to Zm upon A cube into Na. Okay, so Z क्या होगा आपका 4 होगा into m it will be what will be the value of m? So lead sulfide is the PbS and mass of Pb is 207, it is given to you 207.2 plus sulfur is given to you, that is 32. So answer is 239.2. so mass is 239.2 divided by A cube. Edge length is given to you 500 picometer. Again student, 500 into 10⁻⁻ what you will do by yourself. कितना लें हम x की वैल्यू, लेकिन ये क्यूब होना चाहिए, इनटू Na की वैल्यू कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23. आई होप जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू 239.2 डिवाइड बाई 500 इंटू 10⁻10 पावर 3 6.022 इंटू 10⁻23 को जब आप सोल्व करेंगे तो देखते हैं आपका क्या आंसर आता है. यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49. एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन ए simple structure having face centered cubic unit cell. So again density is equal to Zm upon A cube into Na. Okay, so question is that FCC mean you will take 4, but m is given to you 200 gram. m क्या होता है mass upon A is 200 picometer, 200 into 10⁻10
ओके, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻10 into, and Avogadro number here you will not take 6.022 into 10⁻23 because in the given amount it is 24 into 10⁻23. तो कितना हो जाएगा ये 24 into 10⁻23. Then you will the find density and will write in the comment box. So last question is that for today, last question is that calculate Avogadro number from the given data. Student, so density is equal to Zm upon a cube into Na. So इस बार आपको Na निकालना है. Density is 2.165, okay, is equal to Z NaCl टाइप. NaCl Z कितना होता है, उसके लिए फेस होता है. NaCl है तो आंसर कितना आएगा, 58.5 आएगा. अब आपको ए नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको दो एटम Na और Cl के बीच की डिस्टेंस दे रखी है. सो स्टूडेंट्स, ए जो होता है वो दो जो आयन ऑपोजिट आयन होते हैं उनकी रेडियस का डबल होता है. ये आपने ध्यान रखना है. उनकी रेडियस का जितनी सम आएगा, कैटायन और एनायन की जो रेडियस आएगी उनका जो सम जो आएगा उनका क्या आएगा, डबल होता है. सो डिस्टेंस उनके बीच की दे रखी है आपको 281. कैटायन और एनायन के बीच की जो डिस्टेंस दे दी, यानी कि उनकी रेडियस जो दे रखी है वो आपको डबल हो जाएगा. सो ये कितना हो जाएगा, 562. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 281, सो आंसर विल बी 562 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये पिकोमीटर में है, आपने इसको किस में बदलना है, and you need to calculate the value of Avogadro number. I hope you will solve this question and will calculate the value of Avogadro number and will write in the comment box. Okay, so students, only 16 questions are left. Okay, these 16 questions are left. We have completed up to question number 50. Okay, thank you so much.